नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 1. अब केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करें, दे आर अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखेंगे इनके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. नाउ फॉर एग्जांपल दे रिएक्शन विद एयर, जैसे कि ऑक्सीजन. एयर के अंदर मेन कंपाउंड क्या है? ऑक्सीजन है. readily catch fire, it's exposed to air forming a white solid oxide. There's a reason why we keep it in kerosene. अभी हमने ऊपर पढ़ा था in the last topic जो physical properties का था, that we store it in kerosene oil. क्यों? So they cannot readily catch fire if they are exposed to air. For example, sodium reacts with oxygen forming sodium oxide and rubidium reacting with oxygen forming rubidium oxide. तो ये बहुत ज़्यादा reactive reaction हो सकता है. Second reaction जो आपके पास है, ये पहला reaction होगी. The second reaction is with cold water. When an alkali metal reacts with cold water, it can form a base or alkali and hydrogen gas. For example, sodium reacts with water forming sodium hydroxide. साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो सकती है. सोडियम एंड वाटर का रिएक्शन अगर देखें तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन से यहाँ पे शो भी हो रहा है. सेम इज द केस विद रुबीडियम. Observations क्या होंगे when it is actually reacting with water? Now the observations include that it will float on the water, it will ignite, make a fireball, it will dissolve in the water, an explosive reaction will occur. And the metals at the bottom of the group will react more explosively. अभी हमने ऊपर एक property पढ़ी थी that as we go down the group, ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये सारे ग्रुप्स की एक ही बात कर रहे हैं. हर ग्रुप का रिएक्टिविटी ट्रेंड फर्क है एक दूसरे से. अगर मैं ग्रुप 1 को ग्रुप 7 से कंपेयर करूं, वी हैव अ वेरी मेजर डिफरेंस एंड दैट इज दैट द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप नंबर 1 बट द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप नंबर 7. ग्रुप नंबर 7 में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती है. ग्रुप नंबर 1 में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी तो ज्यादा हो रही है. तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा वाटर पे, एक फायर बॉल बनाएगा, आग पकड़ लेगा. इसलिए हमने इनको केरोसिन ऑयल में रखा होता है. तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा कोई एलिमेंट रिएक्टिव होगा, लाइक अगर आपने फ्रेंशियम या सीजियम से रिएक्ट करवाया व्हिच आर द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप 1 मेटल्स, उसके साथ मजीद विगरस रिएक्शन होगा. बट इफ यू चूज सोडियम और पोटेशियम या लिथियम हो गया, रिएक्टिव तो है वो भी लेकिन उतना ज्यादा विगरस नहीं होगा. तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर और आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी. दोज ऑब्जर्वेशंस depend on the reactivity of the particular element we are talking about at the moment. So some of the observations during this reaction with cold water. अब cold water के अंदर जब डालेंगे, it will first of all float on the water. क्यों float on water? If you remember, हमने ऊपर एक चीज डिस्कस की, density is less, volume is more. जब density less है, पानी की density ज्यादा है, ऊपर जो element डाला उसकी density कम है, तो according to your another subject physics क्या कहती है इसके अंदर? कि जितना denser object होगा than water, obviously it's going to float on water. It will ignite, make a fireball, it will dissolve in the water, और एक explosive reaction will occur. और फिर वही बात आ जाती है, the metals at the bottom of the group will react more explosively than the ones above them. फिर अगर हम बात करें द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज विद नॉन मेटल्स, जैसे कि ये इतना रिएक्टिव नहीं होता. क्यों? नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई रिएक्ट सोडियम विद क्लोरीन, मैंने बताया कि अगर हम इनको फ्री स्टेट में रखें तो बहुत डेंजरस है, इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है. लेकिन अगर आप इनके कंपाउंड्स बना दें, फॉर एग्जांपल सोडियम विद क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, दे आर नो मोर रिएक्टिव एनीमोर. इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो आपको ये इस तरह की इक्वेशन मिलेगी विद non-metals example. And these are some of the chemical properties of group number 1.